मैम लिबास. Libas meaning dress. I told. Before I told naye naye libas. Okay. केवल लाज ही नहीं डंगता. लाज meaning shame. Dung meaning cover. नहीं. What they are wearing? हाथ पैर जो चलने फिरते. Where they will dress? हाथ में and पैर में. हाथ में कैसे? Gloves. हाथ में ग्लाउस, पैर में सॉक्स ऑल्सो. हाथ में जो चलते फिरने, काम करने के वास्ते. Why they are for working, they are wearing dress. Okay. उन्हें भी दस्ताने और मोजे से डेंग देते हैं. दस्ताने meaning gloves. How they are wearing हाथ and पैर. दस्ताने gloves. Moje meaning socks. How they will cover? दस्ताने और मोजे से डंग लेता है. सिर पर लेंडे. सिर पर they will put on head also. What is that? That is टोपी. सिर पर लेंडे. उन्हें भी टोपी से डंग लेता है. They will cover their head with टोपी. Clear? अपना तो नंगे ही भले. अपना तो नंगे ही भले. It is better than naked body. That is good. Who called? Gavra told. Why they are covering full body? It's no need. Okay. We'll get to know. We will give nice. Gavra ko gets. Okay. She told no need dress. That's why. ओके एनीवे उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लेती है. आ गर्ल्स सेम कैरेक्टर गवरिया टोल्ड. उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लेती है. गवरिया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है. शी टोल्ड आई नीड टोपी. दैट इज माय विश. ओनली वन ड्रेस आई नीड. विच ड्रेस शी टोल्ड? टोपी. No need frock, lacha, chudidar. No need. Need only one small dress. What? Topi. She only told that one. Topi. Tu पाएगी कहाँ से? Gavra told. From where you will get topi? Gavra बोला. टोपी तो आत्मियों का राजा पहनता है. Who is wearing टोपी? राजा. राजा पहनता है. जानती है? यू नो दैट. एक टोपी के लिए कितना का टाट उलट जाता है. कितना बातचीत करना चाहिए. ओके. एक टोपी के लिए कितना का टाट उलट जाता है. कितना बातचीत करना चाहिए. Need hard work. We didn't get simply that टोपी. कौन पहनता है? राजा पहनता है. इसलिए यू डू मीनिंग ऑफ टाट उलट. व्हाट मोले? मीनिंग ऑफ टाट उलट जाता है. टाट उलट जाता है. बातचीत करना चाहिए और डू होम हार्ड वर्क. एनी वर्ड. ओके मैम. टोपी के लिए. ओके. ओके मैम. डिडंट गेट सिंपली दैट. डू हार्ड वर्क और बातचीत करना चाहिए. Others help also you need. Otherwise you can't make that. Yes. Next one जाता है. जरा सी चूक हुई नहीं की टोपी उछलते देर नहीं लगती. That is not easy. No need each word if I am saying no. Okay, that I will say. This paragraph full I will read and say once more beginning onwards. टोपी तू पाएगी कहां से? गवरा बोला टोपी तो आत्मियों का राजा पहनता है. जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है. जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती. अपनी टोपी सलामत रहे
इसी फिर फिकर में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत. चक्कर मीनिंग what is the meaning? Wish. You wish. You leave this wish. Didn't get a easy way toffee. इसलिए you leave that wish. Okay, chakkar. You write that one. Chakkar. Your wish. Here. Ma'am, what Okay. is the meaning of this sentence? जरा सी चुक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती है. Huh? What is the meaning of that sentence? Which? Ma'am, जरा सी चुक हुई नहीं कि टोपी उछलती देर नहीं लगती. Tarati. Ma'am, जरा सी. 1 second. Yes, once more. Ma'am, third one. जरा सी चुक हुई नहीं कि Once टोपी. more I will. तो टोपी तो पाएगी कहाँ से? From you will where will get a टोपी? गवरा बोला. यस यस गवरा बोला टोपी तो आदमियों का रोज पहनता है. जानती है एक टोपी के लिए कितना का टाट उलट जाता है. जरा सी चूक हुई. whatever you are thinking that is गलती वे. क्लियर है? हुई नहीं कि टोपी उजलते देर नहीं लगती. अपनी टोपी सलामत सलामत मीनिंग पहनी हुई. What is the meaning of चूक? चूक. जरा सी चूक हुई मीनिंग दिस गलती मोളെ. ओके. मैम उजलते देर नहीं. आई थिंक यू डिडंट गेट दैट वन. ही इज थिंकिंग. ओके. अपनी टोपी सलामत रहे बनी रही है. आई थिंक यू कांट मेड दिस टोपी. यू नीड हेल्प. ओके. इसलिए इसी फिकर दिस योर थिंग में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है. So many are wearing that टोपी. मेरी मान तो आई एम सेइंग टू तू इस चक्कर में पड़ सी मत. यू लीव योर विश. Clear? Yes. Then Gavrada Tanig means Samachadar. He was very clever. Next one, check. He was very clever. Gavaria always talking girls' character. They are not thinking about their difficulties. Okay. So Gabriada Tanik Samachadar meaning he is very clever man. He is clever man. इसलिए शक्की meaning no doubt. Whatever he is a clever man, इसलिए whatever he is telling that is correct. Clear now? Gabriada Tanik Samachadar इसलिए शक्की meaning doubt. जबकि गवरेयादी जिद्दी और दुन की पक्की. जिद्दी और दुन की पक्की means that is correct and whatever he is telling that is correct word. This Gavaria simply telling that. डान लिया सो डान लिया. उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया. What he told Gavaria told. Jeham chahe wahim rahu. There is whatever we are wishing that way also there that we will get. Who told? Gavaria told. मालूम के मुताबिक आखे दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले. Next day also they discuss about that. That time Gavaria से told Gavra told इस चक्कर में ये मार्ग in your wish you throw, you leave that. You did anyway you didn't get. टोपी you didn't get.
But she always thinks she's ready to overcome all circumstances, whatever coming. Clear? Gavriya's character that Gavra is not like that, but he is also wise man. Whatever he is told, that also correct. Both side correct. Clear? Okay. If we are doing hard work, we will get a result. That Gavriya told. But Gavra told, so no need. It's very difficult. You can't do Ma'am, that. what is dhan liya? Dhan liya, so dhan liya. Dhan liya meaning that is the one, this one, mole endu paraya. Mukhavara, no? Dhan liya, so dhan liya. And what is the meaning? Yes. And before that, just you read that one. Paragraph you read. Who is asking that? Ma'am, Read, mole. Isha. So wait. I will say that. So read that. Isa, read that. गवरा था तनिक समझदार इसलिए शक की जबकि गवरिया थी जिद्दी और धून की पक्की ढान लिया सो ढान लिया Full read. उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया कहा गया है जहाँ चाह वही राह मामूल के मुताबिक अगले Okay. दिन Yes, Dan liya, so Dan liya. Who told that? Dan liya meaning decision. Whatever we decide, it is decided. Okay. 1 second. Next one. उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया है. कहा गया है जहां चाह वहीं राह. What again it जहां चाह, whatever we wish. There is way also there. Clear, Nones? Yes, ma'am. Yes. Okay. Next, continue. मामूल के मुताबिक आगे the next day दोनों घूरे पर चुगने निकले. Every day they are going like that. Next day also they went. चुगते meaning feeding. Like that. उसे रुई का एक फाहा मिला. क्या मिला? ये underline that sentence. रुई का फाहा मिला. What is the meaning रुई का फाहा? Cotton. Cotton that thread. फाहा. मिल गया गवरिया मारे गुशी के घूरे पर लौटने लगी. Means गुशी से चिल्लाना. Screamed. Okay, sentence full meaning गवरिया मारे गुशी के घूरे पर लौटने लगी. गुशी से चिल्लाना. Clear? Yes. अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहाकर पूछा. He asked. चिहाकर means anxiety, with anxiety. चिहाकर पूछा with anxiety. He asked. क्या मिला? मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया. कॉटन लिंग टोपी का जुगाड़ मिल गया. जुगाड़ meaning arrangement. Whatever we need, that I got. Okay. Jugaad. That arrangement. Thing. Cheese. Means a cotton lint. Clear. That is. गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया. कॉटन लिंग धर दिया meaning रख दिया. She gave to him. क्या है? रुई का faha. Ruhi ka faha word always you remember that we are using that question answer and everywhere also. गवरिया को पहला क्या मिला? रुई का फाहा मिला. Okay. Next. तेरे जैसा ही एक भावरा और दा. घबरा बोला. Then he told one story. Who? Gavara told one story that I read. That is before I read, after that I will say that story.
Samaya, no. Full I will read. After that I will say that story. तेरे जैसा कि एक भावरा और दा. 1 second. Bhavara meaning you write madman. Bhavara. After that a story I will full read. Then another story. Bhavara. Bhavara और दा. Gavara बोला. Bhavara meaning madman. I think you like madman. Then he's saying that is so. Gavara bola. Rasta chalte chalte. Other, a rasta chalte chalte meaning say he start that story. Ek Gavara one day. Gavara meaning madman, not a normal person. Clear no? Bhavara madman. One day one Bhavara रास्ता चलता चलते उसे अचानक सडनली एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया. चाबुक मीनिंग घोड़े का आगे चलने के लिए that one horseshoe. that strip ले leather strip घोड़े आगे के लिए we are using that strip for beating. That strip clear? Yes, ma'am. One we are using other one that is the चाबुक मिल गया. What? चाबुक मिल गया. चाबुक था बेड़ा उम्दा और लचकदार. It is very good. उम्दा meaning good. लचकदार meaning very flexible. Next one. किसी घुड़सवार meaning what is the meaning? घुड़सवार horseman. Horse rider. Horseman के हाथ से छूटकर गिर गया होगा. That is slip by. हाथ से छूटकर meaning slip. छूटकर गिर गया. Okay. Then किसको मिला? बावरा को मिला. Clear? That is strip. चाबुक मिला. चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा meaning screamed. चाबुक तो मिल गया. I got a चाबुक. A strip I got. बाकी बचा 3. I need 3 more things. Which one? घोड़ा, लगाम and जीन. घोड़ा meaning horse. लगाम meaning horse के हम face arrangement thread no that thing. दाने लगाम. Didn't see picture when we pull that one it will stop. Yes, ma'am. Around the horse neck. Ghoda's face. That thing. That one. You got that 3 things. Next one. Jean meaning. Jean meaning क्या है? Seat. Horse riding where you are going. Didn't see that one. Yes, ma'am. Saddle. Lagam. From the horse's mouth. Mouth. Yes, mouth. That thing. So first what he got a chabuk. That strip he got a. And he is waiting for Ghoda, Legam and Jean. He is thinking he will get it. That 3 things also. Why? He is very madman. Like that, Gavriya ne kaha, Gavriya, you got tuika faha. You think you will get, you can make a toffee? No, it is impossible. Clear now? Then after that I will say. चाबुक तो मिल गया बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन. You underline. He is expecting that 3 things. Only he got a chabuk, goda, legam. Legam already I told. Now what is the meaning legam? A thread. Legam and jean. A correct word halter. Legam meaning halter. A strap. Face we can see the a strap. Okay, that is legam. Jean meaning seat. अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे. He think anyway one day I will get these 3 things also. सब काम धंधा छोड़. He
Chod meaning leave his job, everything. Bhavara meaning that madman. Ta umr meaning jeevan var. Life, full life, jeevan var. Ta umr yeh redta rehta. Ha. He expect that. He's wait for that 3 things. His life full, he is waiting for that. Okay. And then again he will say, Baki bejatin godalagam jeen. Like that always he will say. Okay, what he got? Only thread. Then he is expecting horse and seeds, everything he is expecting. And lifelong he spent for that. Will get that? No. He didn't get. Up to where this one? 5 more minutes. Okay, up to there you read. I will take attendance. Yes. Adigesh. Present, ma'am. Advait. No. Albert. No, Albert Malayalam. Alvin. Ma'am, Advait present. Alvin. Ma'am, Advait is not present, ma'am. Yes, okay. Alvin. He was present. Alvin also present. Anashwara Rajesh. Present, ma'am. Yes. Benedict. Yes. Lenin. Present. Irene Maria. Present, ma'am. Yes. Isha Fatima. Present, ma'am. Yes. Lakshmi. Present, ma'am. Lynette. Present, ma'am. Suryadev. Present. Tamanna. Adnan. Adnan M. Shahjahan. Present. Anugrah. Present, ma'am. Harsh. Hira. Present, ma'am. Nikhila Mary. Ma'am, Nikhila is present. Rudra. Yuva. Absent. Zaiba. Absent. Next 70. Alna. Alana. Ma'am, present. Dion. No, ma'am. Absent. Abhinav Krishna. He was present. Jeevan. Absent, ma'am. Gino. Present, ma'am. Krishnaveni. Prarthana. Yes. Raulgar. Present, ma'am. Shraddha. Ma'am, Sarhad, Shraddha sorry. is in Sarhad. 8th. Sarhad. No, ma'am. Shivanya. Present, ma'am. Shivananda. Ma'am, Shivanand. Shivanand. Absent or present? Ma'am, absent. Steve. Ma'am, absent. Okay. So read that. Ma'am, Adnan is also there in our class. Adnan. Ma'am, Adnan M. Shaji. Which class? Ma'am, 8C. Ma'am, 8C. 8th C. Adnan M. Shaji. 8th B. I read here. Ma'am, that is Adnan M. Shahjahan. Adnan M. Shaji. 8th C. Adnan M. Shaji. Shaji. Adnan M. Shaji. Adnan Shaji. Yes. He is absent or present today? Ma'am, present. Ma'am, present. Okay. So read that chapter. Clear? Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. I will send the question answer up to there. One way. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So you will understand that. Yes. Okay. Bye. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.